Hey viewers, you're watching The Savera and I'm Vidhi Joshi. A thick layer of toxic smoke blanketed Delhi this morning, shrouding the city in a grey haze and reducing visibility drastically across major areas, including Lodi Road, Akshardham and India Gate. The air quality index readings in these locations range from very poor, between 377 and 381, to severe, reaching as high as 412, far exceeding the safe levels defined by the Central Pollution Control Board, that is CPCB. Notably, the situation was no better in the outer parts of the capital, where areas like Alipur, Anand Vihar, Ashok Vihar and Bhavana also recorded AQI readings above 400, highlighting the scale and intensity of the pollution crisis in Delhi. Neighbouring cities such as Noida and Ghaziabad reported similarly dangerous pollution levels, with residents across the national capital region struggling to breathe safely. The deteriorating air quality has sparked growing concern among health experts and residents alike. With AQI levels crossing into the hazardous range, citizens are facing an elevated risk of respiratory and cardiac complications, as well as other pollution-related illnesses. The dense smoke has caused visibility to fall below 200 meters in some parts of the city, disrupting daily activities and transport and raising urgent public health alarms. Experts have compared short-term exposure to Delhi's air to smoking several cigarettes a day, underscoring the seriousness of the situation and its potential long-term consequences. Responding to the escalating crisis, the Delhi government, led by Chief Minister Rekha Gupta, announced the extension of the Pradhan Mantri Ujjwal Yojana in order to slum clusters across the city. The move aims to address one of the key contributors to both indoor and outdoor air pollution, that is, the widespread use of traditional stoves and coal-fired heaters. By providing LPG connections to families still dependent on these outdated methods, the government hopes to reduce household emissions, improve public health and promote sustainable living practices. Chief Minister Rekha Gupta has directed the Delhi Urban Shelter Improvement Board to conduct a comprehensive citywide survey in order to identify such households, ensuring that the benefits of the scheme reach those most in need. Alongside this initiative, civic agencies have been mobilized in order to implement a series of intensified pollution control measures. These include large-scale cleaning operations, water sprinkling, mechanical dust suppression and road repair drives aimed at reducing dust and particulate matter. Maintenance vans have been deployed throughout the city and urban local bodies have been instructed to utilize all the available sanitation resources in order to carry out cleanliness and dust control operations. The government has reiterated its commitment to coordinating immediate and long-term efforts across departments to make Delhi's air cleaner and healthier. Meanwhile, the air quality early warning system predicts that Delhi's air will remain in the very poor category in the coming days. Authorities have warned that if conditions worsen further, emergency measures under Stage 3 of the Graded Response Action Plan may be enforced, which could include severe restrictions on construction and industrial activities. Despite all these challenges, the Delhi government remains focused on implementing the Ujjwal Yojana expansion and sustaining citywide pollution mitigation efforts. As the toxic haze lingers over the capital, Delhi continues to grapple with one of its worst air quality crises in recent years, a challenge that threatens not only the environment but also the health and safety of millions of its residents. The coming days will test the effectiveness of the government's response and the collective resolve to restore clean air to the nation's capital. Everyone know about this. Okay, this is nowadays it's a topic. It's a big topic nowadays in India because Delhi. Everyone know that many people from different states they are coming to work here. So this is the government biggest duty to do something about this. Like see, many people. It's a big city and it's a what like a capital of city. And in the capital of city, if the city is like a what full of pollution, air pollution, light pollution, noise pollution. So it is government's duty to do something against this. Like we people have a limit on this. Like even I have heard that even smoking a cigarette is much better than what a normal breathe in what Delhi. So I hope government will take such a
decision as soon as possible. Okay, thank you. इसको खत्म करने के लिए, पॉल्यूशन खत्म करने के लिए आपके क्या सुझाव है? First thing is about the industry factory works. Okay, maybe the government, what government had to do is they have to shift this, or if government had any other option to what reduce this pollution thing, they have to take this action, because it's not an easy thing, because it's been going through for years of years. Okay, so it's not an easy thing to what get rid of this pollution in a easy method. So this is the right time to what take a action, not a small action but a big action. Then only we can get rid of this pollution. सर, हमारा ये कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ और बाकी जगहों पे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़े स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। जैसे कि ईवी का भी स्कोप चल रहा है, तो मैक्सिमम गाड़ी में भी कोशिश की जानी चाहिए कि ईवी गाड़ियों से अगर जहां तक कोशिश की जा सके पोल्यूशन कम करने के लिए, तो गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा ईवी चलाई जाए और डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ियों को थोड़ा कम किया जाए। और बाकी तो पेड़ लगाने का एक स्कीम है, तो गवर्नमेंट मुहिम चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चल रहा है। तो लोगों को प्रेरित होकर कम से कम अपने घर में एक पेड़ बिल्कुल अपने मतलब बच्चों जैसे समझ के लगाना चाहिए, जाके वो आने वाली पीढ़ी को अच्छी सांसें या अच्छी ऑक्सीजन प्रदान कर सके, जिससे कि आने वाले पीढ़ी को एक संदेश जाए कि हमने पुराने लोगों के पेड़ लगाए तो हम लोग अभी हवा अच्छी ले रहे हैं, तो आगे वाली जनरेशन के लिए हम लोग पेड़ लगाए तो आगे वाली जनरेशन को अच्छी हवा वो सब मिल सके। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि पेड़ वेड़ अपना लगाया जाए, और गवर्नमेंट को इस चीज पे खासा ध्यान देना चाहिए। खैर दिल्ली में तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो बहुत सारी जगह पे लगा है, लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये स्ट्रिक्ट कदम गवर्नमेंट को अपने उठाने चाहिए। तो कि किस तरह से फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज है उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए। अदर कंट्रियों में रिसाइकल का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अपने यहाँ भी वो सब लागू होना चाहिए कि रिसाइकल कितने ज्यादा कर सके, वेस्ट को कम कर सके। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। अपने पास तमाम तरह के उपाय हैं, उपाय पे अमल करने की जरूरत है। हमारे यहाँ स्कीम लागू हो जाती है लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको जमीन पर पहुंचाने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। ओके, पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस चीज का इस्तेमाल करें? सर, पॉल्यूशन से अगर आपको बचना है तो आप मास्क लगाइए, घूमिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट एक स्कीम ले आई थी कृत्रिम बारिश वाला, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके। वो तो उसका हमको उतना आइडिया नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। और आप ज्यादा कोशिश करें कि घरों में से बाहर घर से बाहर जब निकले तो मास्क जरूर लगाएं, जिससे कि आप पॉल्यूशन से बच सकें। और पॉल्यूशन तो कई टाइप का पॉल्यूशन है, अब जैसे वाटर पॉल्यूशन है, आप देंगे क्या क्या दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन से? पॉल्यूशन से यहाँ पे बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, या जो दमा का पेशेंट है उसको खासा ज्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो पेशेंट जो भी है उनको काफी बच के रहना चाहिए, और मास्क वगैरह का यूज करना चाहिए। आंखों में जलन है तो आप चश्मा सनग्लास का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉल्यूशन से बच सकते हैं। माय नेम इज भुवन। भुवन जी, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? पॉल्यूशन तो यहाँ पे काफी बढ़ रहा है। मैं 2-4 दिन से यहाँ पे रोज साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो मैं रोज देख रहा हूँ यहाँ पे सारे लोग मास्क लगा के रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्केटिंग जो भी कर रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा होगा। पहले से यहाँ विजिबल होता था, यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है। सब लोग मास्क लगा के रनिंग कर रहे हैं, और हमें पॉल्यूशन कम करने के लिए जैसे सरकार ने पहले ऑड इवन की कार शुरू करी थी, हमें वैसे ही शुरू करना पड़ेगा। और यही सब है। बाकी बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या पॉल्यूशन से बचने के लिए हमें मतलब मास्क पहनना चाहिए और गॉगल्स पहनने चाहिए, क्योंकि आंखों में जलन होती है पॉल्यूशन की वजह से। यही सब करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और जैसे कि हमें अपने हाथ मुंह आंखें साफ कर देना, क्योंकि आंखों में पॉल्यूशन रहता है, ये सब रहता है।